हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंस साइंस। पढ़ाकू, आज हम बात करेंगे उस पोर्शन की विच वॉज लेफ्ट इन आवर लास्ट वीडियो, गेटिंग टू नो प्लांट्स। वी विल स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे, बट दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू नॉट परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ योर एल्डर्स। अगर वो नहीं है, आपके कोई सीनियर्स नहीं है, तो प्लीज़ इसको मत करें। हमें ज़रूरत है a leaf, a spirit container or a small quantity of spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्राइपॉड लेते हैं। ट्राइपॉड पे हम गॉज रख के एक बीकर रखते हैं। देन वी विल पुट वन टेस्ट ट्यूब इन इट एंड दिस टेस्ट ट्यूब इज हैविंग which is half filled with the spirit and one leaf is completely immersed in it. एक पत्ती ग्रीन लीफ इसमें पूरी तरीके से डूबी हुई है। हम बर्नर को जलाते हैं, पानी गर्म होता है, स्पिरिट गर्म होती है और ये पत्ती भी उसमें थोड़ा सा बॉयल हो जाती है। देन आफ्टर दैट वी विल टेक आउट दिस लीफ। हम इसको बाहर ले लेते हैं, इसको रनिंग वाटर में बहुत सावधानी पूर्वक धो लेंगे और हम इसके ऊपर थोड़ी सी आयोडीन की बूंदें डालते हैं। वी विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। what will we get? The color of the leaf will change. It is turning into bluish black. Right. ये लगभग गाढ़े नीले रंग की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? Just due to the presence of starch. This is the property of iodine. आयोडीन की प्रॉपर्टी है कि वो स्टार्च को ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देती है एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज वेरी कॉमन इन ऑल द प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एज यू आर वेरी मच अवेयर, सारे के सारे अपनी एनर्जी को पाने के लिए, ग्लूकोज को पाने के लिए, फूड को पाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती है, इन विच सनलाइट, water, carbon dioxide, chlorophyll, all these things are required. Now we will talk about root. These roots are providing strength to the plants. ये एक ताकत देती हैं, मजबूती देती हैं और वो पौधा, वो पेड़ इस जमीन के ऊपर मजबूती के साथ खड़ा रहता है। Okay, now another activity, we will take two bowls. हम दो कटोरियां ले लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों कटोरियों में हमने थोड़ा सा कॉटन रख दिया, रुई रख देते हैं एंड वी विल पुट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ओवर इट। और उसमें हम एक कटोरी में बीज रखते हैं चने के और दूसरी में हम बीज रखते हैं भुट्टे के। कुछ ही समय बाद, लगभग 3 या 4 दिनों के बाद, हमको दिखाई पड़ता है वेरी यंग प्लांट्स कमिंग आउट फ्रॉम द कॉटन। Now question is can you separate these tiny plants from the cotton? No, it is not easily possible at all. What does it mean? Roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor to the plant to the soil. Now, guys, there are 2 types of roots. Number 1, that is taproot, having one main root, and others very smaller fine roots which are called lateral roots. And another type of number 2 roots, that is fibrous roots, in which all roots seem similar. Now we will talk about venation of the leaves. There are 2 types of venation in the leaves. One is parallel and another is reticulate. Parallel venation, just like banana, maize, wheat, paddy, all these plants are having parallel venation, जिसमें ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में सारी नसें हमें
एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं, पैरेलल दिखाई देती हैं. Another kind of venation, that is reticulate venation, in which we find a very fine network of the very fine veins. एक जाल सा बुना हुआ हमें पूरी पत्ती के ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि पीपल, बरगद, आम, all the. पढ़ाकू, I am going to tell you one very good thing, very interesting thing. You will be astonished. There is a relation in between venation and roots, type of roots. If plants are having taproot, the venation will be reticulate. And if there is parallel venation, then there will be fibrous roots. So, this thing, please keep it in your mind. Guys, now we will understand about the parts of the flower. The main parts of the flower are sepals, petals, stamens, pistil, and you have seen petals are in a closed bud, which is the most prominent part in a bud. Did you see that this part is made of small leaf-like structures? They are called sepals. The most prominent parts of the open flower, these are petals. Very colorful, bright, having fragrance, that is petals. These are petals. Friends, when we remove the sepals and petals, what do we get? We get stamens and pistil. Let us talk about the ovary. It is the lowermost and swollen part of the pistil. To understand this pistil, we will cut the ovary in two different ways. One is transversal and another one is longitudinal way. Here I have shown both the ways in which we have cut it. In the ovary, there are some very small bead-like structures which are called ovules. Today, we have studied features and functions of leaves, stems and roots. We will learn about the function of flowers in higher classes. By the meantime, Padaku, do not forget before leaving to subscribe the channel, to like the video. Please take care of yourself. Goodbye.